Welcome to the episode fourth of the Ultimate MBA podcast. Today we have Abin Arjun with us, another batchmate of mine from IMT Ghaziabad. He is the founder of an NFT startup Aura and has worked in Bacardi, Farm Easy, and OML. OML, I think, which used to manage All India Buckshow, the AIB, somewhere. I think Yeah, on was a parent company you had done that. yeah. Welcome, Abin, to the show or the Thanks, Arjun, for podcast. having me. Yes. So without much ado, Abin, your startup Aura is into the space of NFT gaming. Correct. So crypto, NFT, and then NFT gaming. So हम्म, what is this? Like, है क्या exactly? जब तो बेसिकली जैसे गेमिंग में इन ऐप परचेजेस होते हैं जैसे आप स्किन्स हाँ, खरीदते हो फोर्टनाइट में पबजी में तो वो हाँ, एक सेंट्रल सर्वर पे होते हैं एनएफटी गेमिंग में दैट इज ऑन अ डिसेंट्रलाइज सर्वर एंड क्योंकि इट इज एन एसेट जिसके लिए आपने पैसे दिए होते हैं तो जनरली पॉपुलर गेम्स आते हैं ओन मार्केट प्लेसेस तो वो ट्रेडेबल ऑन द मार्केट प्लेस होता है सीएस गो का एक होता है डोटा का होता है So the idea is that with the advent of like distributed ledger technology, which is blockchain, right? You're able to put things on a public network, and people are able to verify okay, a transaction is secure or not, has been done or not. ऐसे जैसे OLX में वैसा स्कैम टाइप नहीं होगा कि अरे मैंने तो पैसे भेज दिए आपको मैं नहीं मिलेगा. आर्मी वाला बंदा हूँ मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी है. हाँ हाँ तो ये सब नहीं होगा. इफ यू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट के आई अप्रूव दैट दिस इज गोना हैपन एंड एसेंशियली व्हाट हैपेंस इज अ टोकन स्वैप ऑफ सॉर्ट लाइक आई से कि मैं 10 रुपए दे रहा हूँ तो वो ब्लॉकचेन पे रजिस्टर होगा and you'll receive that and everyone sort of will know okay there has been a transaction that has happened between party A and party B. तो हम जो कर रहे हैं दैट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑन टॉप ऑफ दैट जहाँ पे एक गेमिंग एसेट है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बोल रहे ओके दिस एसेट विद all of these aim to work towards the larger gaming industry in general but we're starting out in the web3 space so let's see how it goes. Yeah, एक्साइटिंग क्योंकि ऐसा बेसिकली डोटा या कॉल ऑफ ड्यूटी में जो इन ऐप परचेसेस होती है दे आर सेंट्रलाइज्ड एंड द गेम मेकर मेक द मनी आउट ऑफ देम. correct. बट इन योर मार्केट प्लेस और द डिसेंट्रलाइज्ड ऑरा जो इनेबल कर रहा है द Hmm. यूजर्स विल मेक मनी आउट ऑफ Correct, दैट. correct. So एंड एक primary game studio will also make money like क्योंकि think of it like के first time जब mint कर रहे हो या generate कर रहे हो so that is the game studio is ensuring के this is happening right like I am minting like 100 skins of say Fortnite so first time sale is like a flash sale or like a sale on Flipkart right तो उसमें the game studio makes money then there is a provision to add royalty to it so any further sales also the game studio can stand a chance to make a cut of that, right? रॉयल्टी जैसे बोलते हैं. करेक्ट रॉयल्टी सो एंड यूजर को ये फायदा होता है कि आप सेल तो कर सकते हो एटलीस्ट एंड नॉट जस्ट विद इन द इकोसिस्टम जैसे अगर फोर्टनाइट है तो बस फोर्टनाइट में ही नहीं मे बी स्वैप विद समवन आउटसाइड द इकोसिस्टम होता है जैसे अगर मैं डोटा का मेरे पास एक कैरेक्टर है ये एक्सेसरी है और सीओडी का कोई एक्सेसरी है आज के डेट पे यहाँ पे स्ट्रेट स्वैप पॉसिबल नहीं है तो हम इस तरह मूव कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट स्वैप भी पॉसिबल हो जाए क्योंकि देन दैट इज योर टेकिंग वैल्यू आउट ऑफ फ्रॉम वन इकोसिस्टम एंड स्वैपिंग अप विद अनदर इकोसिस्टम ये अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये कर सकते हैं. काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. सो टेल मी वन थिंग, यू आर इन द गेमिंग इंडस्ट्री, लाइक ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन में बात निकली थी कि शायद कुछ $260 billion की वर्ल्ड वाइड. करेक्ट सो करेक्ट करेक्ट. व्हाट इज द मार्केट साइज ऑफ दिस इंडस्ट्री दैट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ? So we are so in-app purchases account roughly 30-40% of this overall industry size, right? And in-app purchases has overall evolved over the last 6 years. ओके. उसके पहले it was like you build a game and you sell CDs of that, है ना? हाँ. There were no monetization schemes. A lot of that monetization schemes came when Google Play and Apple Play also went very popular. People realized, oh, there can be microtransactions within the game, which people would be willing to pay for. And building a game is a very expensive exercise in general. It is like you have to understand what मतलब क्या अच्छा लगता है एंड गेमर को किसी भी गेम में. It can be as intensive like as a Call of Duty or a Fortnite or a God of War
तो एज बेसिक एज अ कैंडी क्रश, राइट? वो एक ओके। एक वो डोपामिन हिट होता है जो गेमर को मिलता है जब वो ये मतलब मजा ही आ गया करके, राइट? तो क्योंकि इतना वाइड स्प्रेड है ना, तो ऐसे कोई फॉर्मूला तो नहीं है टू फिगर आउट अच्छा ये चलता ही है. देयर हैव बीन लार्ज फ्रेंचाइजीज व्हिच हैव फेल्ड आल्सो, जैसे डूम I है. guess Zynga used to be one, right? Or they're still in the Angry Bird wala. हाँ वो Are they लोग still है, doing good? they're still there, हैं? डूइंग वेल आई वुड से. थोड़ा सा ऑफ कोर्स पीक पॉपुलैरिटी से तो नीचे गिर गए हैं, बट डूइंग वेल. आई थिंक राइट नाउ द probably the best gaming studio which is doing relatively well across multiple genre is Epic Games. Okay. They did pretty well. Fortnite did What is well. their Fortnite is and anything else that they have? हाँ हाँ, फॉल गाइज उनका है. उनका एपिक का पूरा खुद का एक स्टोर है. दे द फेमस एपिक वर्सेस एप्पल बैटल हैपेंड बिकॉज एपिक थॉट के एप्पल कुछ ज्यादा ही चार्ज कर रहा है फॉर गेट कीपिंग ऑन ऐप स्टोर, विच इज सॉर्ट ऑफ ट्रू. एप्पल चार्जेस अ हायर टेक रेट, like roughly How much? 30%. 30%? Yes. 30% they charge, right? But that's on payments. Like it just tells you कि use our payment infrastructure to do any in-app purchase. The Epic said, yeah, let's go around this. मैं बोला कि हम SDK दे देंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, फिर पेमेंट हम अलग से फैसिलिटेट करा लेंगे, आपको वहां से नहीं करने की जरूरत है. हाँ. तो विच इज फेयर इन अ वे. एप्पल का आर्ग्यूमेंट है कि हमने इतना बड़ा इंफ्रा बनाया है तो उसके तो पैसे लगने चाहिए, अगर हाईवे हमारा है तो टोल तो लगेगा. तो मतलब फेयर इनफ, बट एप्पल, यू बीन एप्पल, थोड़ा सा बिग बुली तो हो ही जाता है. एप्पल का तो एक स्मॉल वर्टिक मतलब स्मॉल बोलना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी. और हाँ, उनका शायद एक वर्टिकल भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी से ज्यादा रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर लेता होगा शायद. उनका जो कर ही लेता है. हाँ एयरपोर्ट्स है दे डू हाँ, $20 billion इन करेक्ट. रेवेन्यू और मोर देन दैट कुछ. करेक्ट. मैं भी अभी मतलब उन्हें चंदा कर ही रहा हूँ. या. तो ऐसा है. हाँ, बट हाँ, गेमिंग में कहानी मतलब सही चल रही है. ओवरऑल द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेल, and we are probably at the periphery क्योंकि Web3 gaming is very small. There are hardly 3,000 games in the ecosystem which are in various stages of development. Playable probably 500 only. And the overall gaming system is 800,000 games across PC, Nintendo, Xbox, mobile, ओके. multiple. So starting out, but interesting times. A lot of games have come and gone, and now there is a little bit of maturity in the game maker's approach of how do you tokenize the asset, what is it that you're looking at. So interesting times ahead. तो एक क्वेश्चन है एंड सिंस आई सी अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज ब्रिंगिंग प्रोडक्ट. काफी लोग बोलते हैं कि हमने वेब 3 के लिए प्रोडक्ट बनाया है या हमने and not talking about gaming studios या companies like Apple, but Hmm. every company was trying to get a share of metaverse. So Correct. what do you think of that? Like, is that metaverse alive or that metaverse for majority of those companies is dead अभी? Yeah, I think for a majority, probably dead. And actually, of course, like in the hype cycle, right? You tend to see everyone just trying to figure out, okay, how do you ensure that this happens, right? Just say, I know in peak 22, there was a NFT event concert of sorts, and वो भी चल गया था, ठीक है? The So rationale NFT being, event concept was not, it was all online. It was not physically or anything. It was not all really, online on हाँ. tokens. करेक्ट. सो मतलब इसमें इनोवेशन कहाँ से आ रहा है? देयर इज अ लॉट ऑफ इनोवेशन कमिंग फ्रॉम वेब टू इटसेल्फ. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वो है. थिंक ऑफ इट एज अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जिस्टिंग तो पूरा स्टैक ही बेकार है, राइट? जैसे अभी हम भी हाँ. काम करते हैं, वी डू लाइक 25% वेब थ्री, 75% वेब टू, क्योंकि आपका आर्किटेक्चर बेस्ड और एवरीथिंग इज वेब टू. बिना उसके आप नहीं बना पाओगे. तो वो लॉट ऑफ पीपल जस्ट इग्नोर दैट लेयर के नहीं नहीं हम तो So प्योर वेब थ्री है. तो दैट अनफॉर्चुनेटली आई वुड से बैकफायर्स, क्योंकि एनी न्यू टेक्नोलॉजी इज नॉट वेरी एफिशिएंट आल्सो. लॉट ऑफ टूलिंग एब्सेंट, खुद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीजें बन नहीं रखी है. तो इट्स मतलब इट्स स्टूपिड टू से कि हम तो सिर्फ वेब थ्री पे काम करेंगे. इट्स दैट इट डजंट वर्क आउट वेल, एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आर फेस दैट, एंड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट शट डाउन बिकॉज वो बेस रियलिटी से दूर भाग के एवरी करने लगे. कंपनी वाज ट्राइंग. जैसे कोई रिपेयर कंपनी है वो बोल रहा है कि मैं रिमोटली जनरेटर रिपेयर करवा दूंगा थ्रू मेटावर्स.
I mean, they came out with all those applications, but then I think, and I've seen some projects happening across places ऐसी डेमो वगैरह में, तो हम्म वो इतना वो हार्डवेयर ही अवेलेबल नहीं है फॉर देम टू डू ऑल ऑफ दैट. मतलब वही था कि मतलब इट्स yeah, a lot of like unsustainable or unfeasible projects right now. What has remained now is folks who understand Web3 and it's a mix of Web2 and Web3, and they understand, okay, this is what is going to work. There are definite benefits to Web3 overall. जैसे finance is now a much mature space in Web3. तो बेसिक एक एग्जाम्पल. कॉन्सेप्ट, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइक योर फॉरेक्स, राइट? फॉरेक्स हम्म. करने में प्रॉब्लम ये होती है कि you're dealing between like two three governments, right? Like if I want to हाँ. send money from India to US, uh, there is an institution which sort of says, okay, we'll decide what is the exchange rate, right? And based on that, you have to ensure liquidity pools in each countries. तो एक वेस्टर्न मनी है, वो क्या करता है, इंडिया में एक पूल रखता है विच इज यूएसडी इंडिया INR, ओके. यूएस में एक पूल रखता है विच इज INR USD. सो इफ समवन सेंड्स मनी राइट, या रेमिटेंस आता है यूएस से, तो ऑल दे डू इज डिडक्ट द लेजर इन द पूल दैट एग्जिस्ट बोथ वेज. जैसे यूएस से किसी ने मुझे भेजा, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी. बेसिकली. हाँ पूल एडजस्टमेंट हो रहा है एंड आपको इंडिया वाले ही पैसे दे रहे हैं या वहाँ पे यूएस वाले ही आपको पैसे दे रहे हैं, राइट? एंड टू एनेबल दिस, वो इतना बिग फैट इनएफिशिएंट सिस्टम होता है, इसलिए आप देखते होगे 4%, 3%, 5% फॉरेक्स चार्जेस लग रहे हाँ. हैं. एंड जहाँ पे रेमिटेंसेस कम है, इन द सेंस मनी फ्लो ऑफ दैट पेयर इज लेसर, जैसे अगर किसी अफ्रीकन कंट्री में आपको भेजना है या किसी हम्म. नॉर्डिक कंट्री में भेजना है जहाँ पे इंडिया और उस नॉर्डिक कंट्री का उतना ज्यादा रेमिटेंस है ही ट्रेड है नहीं, नहीं, ट्रेड कम है. हाँ, तो वहाँ आपका फिर चार्जेस विल गो एज हाई एज लाइक 15% ऑल्सो, ठीक है? तो ये सरकमेंटेबल है, लाइक इफ देयर इज अ गुड टेक्नोलॉजी यू कैन डू इट. जैसे इवन व्हेन पेपाल केम अप विद इट सिस्टम ऑफ ग्लोबल पेमेंट्स, राइट, पेमेंट इट या. स्टिल इज वर्किंग विद गवर्नमेंट्स टू इंश्योर के ये कम हो जाए. तो अभी भी पेपाल में भी 3-4% लग जाता है, वो भी उतना रिड्यूस नहीं कर पाया. यही सेम काम जैसे ब्लॉकचेन में कैसे हो जाता है कि आपने पेटीएम जैसा मॉडल है कि पेटीएम में आपने टॉपअप कर लिया, तो उसके पेटीएम हाँ. आपसे अभी तो जीरो ले रहा था जब मैंने पेटीएम स्टार्टेड, राइट? इसमें क्या है कि यू आर पेइंग द पीपल हु रन द इंफ्रा, एंड बिकॉज इट्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड अनोनिमाइज्ड सो टू से, तो यू आर पेइंग पीपल अ परसेंटेज, फ्लैट फी, है ना? ऐसा ऑलमोस्ट फ्लैट फी होता है. देयर इज, अगर तुम $100 भेजो या 1 मिलियन भेजो, पैसा फ्लैट लगता है. तो दैट इज वाई लाइक वहाँ पे इनएफिशिएंसी है डिजाइन में, बट आई थिंक इट वर्क्स आउट. काफी लोग यूज कर रहे हैं. तो उसमें क्या है कि आप टॉपअप कर लो ब्लॉकचेन पे एंड फिर सारी ट्रांजैक्शन आप ब्लॉकचेन पे कर लो. इट डजेंट मैटर आप कहाँ से हो, आप इंडिया में हो, यूएस में हो, ब्राजील में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप बेसिकली एक पेटीएम पेटीएम ट्रांजैक्शन चल रहा है एंड सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. कल को आपको वो फिएट में कन्वर्ट करना हो, तो अगेन एक वो चार्ज लगेगा, जैसे जो भी उधर का ऑन रैम्प ऑफ रैम्प का है, तो उसमें एक थोड़ा सा कॉस्ट लगेगा. बट देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गोज अमेजिंगली डाउन व्हेन कंपेयर्ड टू लाइक योर ट्रेडिशनल वेस्टर्न यूनियन या पेपाल या एनीथिंग. तो बेनिफिट्स है फॉर वेब थ्री एंड दे आर इवॉल्विंग ओवर टाइम. अभी आई थिंक ओवरऑल इट्स वन वन प्लस ट्रिलियन इंडस्ट्री हो गई है. तो 1+ ट्रिलियन यार काफी है ठीक ठाक बड़ा है. मतलब 1+ ट्रिलियन आई थिंक मार्केट कैप आई गेस क्रिप्टो वेब 3 एनएफटी का मिला के सब गोल्ड मिला के के बराबर हो जाएगा या नहीं नहीं यार, नहीं गोल्ड नहीं से नहीं नहीं, वेरी फार, गोल्ड पर. नॉट, नहीं नहीं नहीं, काफी दूर है अभी, बट स्टिल गोल्ड प्रीटी, पर. लाइक हाँ, बेटर देन अ जीडीपी ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज. एंड काफी है, मतलब अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर आल्सो कमिंग. सो पहले आई थिंक 2-3-4 साल पहले ऐसा था कि मे बी दिस विल नॉट वर्क आउट, बट नाउ द बिग प्लेयर्स आर कमिंग, एवरीवन's invested in this. A lot of countries are trying some or the other sort of cryptocurrency format. जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल डॉलर या डिजिटल रुपी है, राइट? सीबीडीसी. तो सीबीडीसी, तो काफी लोग वो, काफी मतलब काफी इन द सेंस 90+ कंट्रीज आर एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस. सो इट इज हियर टू स्टे, है ना? पीपल हु अडॉप्ट दिस विल गेट अहेड ऑफ द कर्व, विल हैव अ सर्टेन एडवांटेज आल्सो इनिशियली. तो एक्साइटिंग टाइम्स, इसलिए हम यहाँ पे बट यू आर सेइंग कि adopting the tech of it
एंड नॉट द स्पेकुलेशन पार्ट ऑफ इट कि मैंने आज अगर इतने का बिटकॉइन लिया है तो हाँ, कल करेक्ट, उतना हो जाएगा, नॉट करेक्ट, दैट, यू आर मोर टॉकिंग ऑन द टेक पार्ट ऑफ करेक्ट, करेक्ट. तो वो it's good, like a bull and a bear cycle happens, right? In a bear cycle, everyone who's on the speculation end of it or just to scam, right? A year or two back, तो इतने scam होते थे कि मतलब, और इतने sophisticated एक scams. एग्जांपल, एक एग्जांपल लाइक फॉर द पीपल आर लिसनिंग, व्हाट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एनएफटीज या क्रिप्टो स्कैम दैट यू हर्ड? तो in terms of like ऐसे shocking value, तो एक गेम है Axie Infinity. ओके उनका at a time, at their peak, they had a treasury of roughly $4 or $5 billion. As in, people ओके, had put in so much money. ऐसा. $4 billion, ओके. हाँ. तो in their native tokens. So this is not like मैंने ETH में डाले, BTC में डाले. मैंने AXS और SLP उनके जो उनका खुद tokens का हैं. टोकन जो खुद उन्होंने बनाया है, जिसकी Correct. वैल्यू इज नॉट डिफाइंड बाय अदर पीपल हाँ. बट थ्रू देयर ओन सिस्टम, इट्स नॉट ईटीएच Correct. और बिटकॉइन. करेक्ट. तो SLP AXS का ऐसे पब्लिक मार्केट्स में ट्रेड कर करके एक USD वैल्यू बन गया, ठीक है. हम्म. उसमें 4-5 बिलियन डाले. तो ऐसा एक वीक हुआ था जहाँ पे एक हैक हुआ एंड 650 odd million गायब हो गए. एंड एक हफ्ते तक उन्हें पता भी नहीं चला. एंड देन दे गॉट टू नो कि अच्छा ऐसा हो गया है. इतने पैसे चले गए. तो आई वाज लाइक 650 million तो बहुत ज्यादा है. दैट इज अ या लॉट ऑफ मनी. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ people see such high amounts of money in their life, and it just got wiped out of their system. टू So मच मैन. काफी ज्यादा था. एंड सोशल इंजीनियरिंग स्कैम में आया वर्ड के. ओपन सी का एक काफी अच्छा यूजर था, आर्ट बेस्ड यूजर था. वो यूज टू कलेक्ट अ ओके लॉट ऑफ आर्ट. तो एंड यूज टू सेल ऑल्सो अ लॉट ऑफ आर्ट. तो उसकी रॉयल्टी में कहीं कुछ इशू आ गया था. तो ओपन सी का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग नहीं था. ओके पता नहीं किसी ने उसको डिस्कॉर्ड पे ओपन सी का डीपी वगैरह डाल के बोला कि मैं सपोर्ट से हूँ, ऐसा. तो इस बंदे ने बोला ओके मेरा ये प्रॉब्लम है. उसने बोला कि आ जाओ स्क्रीन शेयर पे. उसने बोला ठीक है. फिर उसका जो लेजर का एक लेजर करके एक स्टिक होती है, दैट इज लाइक अ हाँ कोल्ड वॉलेट. हॉट वॉलेट ये होता है कि मतलब आप मेटामास्क जो चलाते हो, ठीक है, तो उसमें डायरेक्टली चल जाता है. तो लेजर में ऐसा था कि अनलेस यू प्लग इन दैट टू योर सिस्टम, nobody can steal your money. MetaMask में people ओके can still steal your money even when you are like away from your system also. Still ओके requires approval, but possible है. तो उसने लेजर ऐड किया अपना. उसने बोला ठीक है स्टेप्स 1 2 3 करते जाओ, आप विड्रॉ कर पाओगे. और ऑन कॉल उसका ऐसे 1-1.5 मिलियन. एंड बाय द टाइम ही रियलाइज व्हाट ही वाज डूइंग एंड दिस इज नॉट अ ओपन सी सपोर्ट, तब तक काफी उसके आर्ट चले गए थे. एंड देन ही वाज रेसिंग टू शट डाउन देम फ्रॉम विड्रॉइंग मोर. एंड फिर उसने ट्विटर पे थ्रेड डाला था कि काफी सैड हो गया मेरे साथ. तो काफी सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स चल रहे थे. नाउ थिंग्स आर अ लिटिल बेटर. hasn't that स्कैमर्स happened कम with हो गए. मिस्टर बीस्ट also? मिस्टर बीस्ट की $2 million, ही टोल्ड a story that उसने अपने लैपटॉप पे की लिख रखी थी अपने बिटकॉइन वॉलेट की. एंड सो तब so तो someone दैट इज came वेरी in to डम. take so someone came to take his laptop and key was written just there. ये तो हाँ थोड़ा. तो ओवरऑल हाँ ऐसे वी आर मूविंग अ लिटिल अवे फ्रॉम स्कैम. आई एम नॉट सेइंग स्कैम प्रूफ होने वाला है इन द नियर फ्यूचर आल्सो. यू स्टिल हैव टू बी वेरी विजिलेंट. बट आई थिंक हाँ थिंग्स विल इम्प्रूव. यस. One interesting, I think I've been reading about Bored Ape या जो बाकी NFT थे, और हाँ. Jack's first tweet. So उसकी value जो थी peaks, I think it is down 99.99%. So you करेक्ट. are working in an NFT gaming space. So करेक्ट. when the values have plummeted and people have declared it dead, you are building something. So what is your rationale behind building that? राइट. सो आई स्टार्टेड लाइक लेट 21 है ना. तो तब Okay. NFT वाज एट इट्स पीक मतलब. Yeah. एंड अर्ली 21 आई वांटेड टू सी क्या है लाइक. हाँ. सो so two Polygon founders like approached me, would you be interested in doing a project like this? So I was like, let me understand this first क्योंकि मुझे business to business वाले models नहीं समझ आते. I understand consumer businesses well, and And NFT is Polygon is more the of a. biggest blockchain company हाँ that came correct. out of India, right? हाँ तो Polygon is like more business facing, developer facing.
वो मुझे नहीं समझ आता था। तो मैंने बोला कि लेट मी फिगर आउट इफ देयर इज अ कंज्यूमर प्ले हियर, एंड एनएफटी वाज अ कंज्यूमर प्ले, and OpenSea also had started doing well, and I spent my like little bit of my money, like 50-60,000 of my own pocket. Back then OpenSea में एक अपलोड करने में they are using the Ethereum network. Ethereum network is very expensive Okay. that time. अब तो काफी improve हो गया है। तो एक ट्रांजैक्शन में INR में 6-7 हज़ार रुपये लग जाते थे जस्ट लिस्टिंग द Okay. एनएफटी ऐसा। तो मैंने थोड़े डिजिटल आर्टिस्ट को भी रीच आउट किया था, तब बहुत ही क्रेज चला था। मैंने बोला कि लेट्स सी कैसा है। तो थ्रू आउट द होल प्रोसेस आई रियलाइज कि ये बहुत ही ब्रोकन प्रोसेस है। वी आर नॉट एबल टू सेल इवन वन 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 एनएफटी, है ना, क्योंकि डिस्कवरी नहीं थी। 2.3 मिलियन एनएफटीज थे तभी उस मार्केट प्लेस में। तो वी आर लाइक कि कैसे ही होगा अनलेस द आर्टिस्ट हिमसेल्फ ट्राइज टू सेल इट वेल। अब आर्टिस्ट कहाँ सेल करेगा? इंस्टाग्राम में बोलेगा लोगों को कि भैया यहाँ कर लो, यहाँ से ले लो। तो इट वाज लाइक अ फील्ड एक्सीडेंट फॉर मी एंड कि यहाँ आर्टिस्ट तो भी वही जो पॉपुलर है वो बेच पाएगा। करेक्ट है ना। तो वो ऐसा वो विशियस या वर्चुअस साइकिल जो भी बोल लो, है ना, कि हाँ। वो इज पॉपुलर वो बेच पाएगा, वो अनपॉपुलर कम बेच पाएगा। हाँ। तो वो वाला था। तो मेरे को लगा कि अरे ये तो डिफिकल्ट है। फिर मैंने ऑफलाइन ऑक्शंस और आर्ट वर्क का थोड़ा सा पढ़ा टू अंडरस्टैंड कि इनका कैसे चल रहा है। जैसे क्रिस्टीज हो गया, सॉथबीज हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वहां से रियलाइज हो कि उनका भी ऐसे बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है कि पहले क्यूरेटर है, फिर एक गैलरी वाले हैं, फिर कलेक्टर्स है। तो एक अच्छा खासा उनका वैल्यू चेन सिस्टम है। बट इट डिपेंड्स ऑन स्कार्सिटी, कितना आप स्कार्स कर सकते हो, राइट। एंड एनएफटी का तो बेस प्रेमाइज ये था कि हम स्कार्सिटी को प्रूवेबली दिखा सकते हैं, ये वो। तो आई वाज लाइक अगर स्कार्सिटी होनी चाहिए राइट, यू कैन हैव 2.1 2.3 मिलियन एनएफटी ऑन डिस्प्ले, क्योंकि देन तो स्कार्सिटी कहाँ से हुई है। तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज डूइंग समथिंग, राइट। इट जस्ट हाँ। डिफीट्स द पर्पस। सो व्हाट इज infeasible at an offline market, right? It can't be feasible in an online market just because you say so. So by that time, I was very clear that art market overall, if the offline market says, okay, this is what, the base intrinsic value is in its scarcity and less trades over a lifetime of an art, right? That is how you should maintain on the online The model Mona also. Lisa example that you gave me. Correct. है तो Mona Lisa doesn't trade so often, right? And if it trades, there is a jump in value when it trades, right? That is where someone makes money. अब अगर आप हर रोज स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड करोगे तो तब तो खत्म हो गई ना बात, तो इट्स यूजलेस। तो आई रियलाइज कि हाँ ये मार्केट तो नहीं चलेगा, दिस इज नॉट समथिंग। एंड आई बीन डूइंग गेमिंग सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मैंने इन ऐप परचेजेस भी किए हैं। एंड आई रियलाइज कि ये एक छोटा था, बहुत अंडर 50 गेम्स थे व्हेन आई स्टार्टेड आउट। तो अगर कि यहाँ एक फिट है and this is where it could work out. So late 21, I started working on this to figure out, okay, let's see if there is something out here, and अगर कुछ होता है तो सही है। And अभी thankfully we have been through a lot of up and down, but अब सही चल रहा है। तो came out with our product, traction बढ़ रहा है, and the overall industry is also doing well. 50 गेम्स से तभी अभी 3000 गेम्स है, तो आई एम श्योर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। Yeah. So I've seen here in Canada. So I'm sitting out of Canada. There are a lot of, so just like you said, scarcity की वजह से चल रहा है या scarcity होना चाहिए। तो यहाँ पे comic book collectors का एक बहुत niche segment है who will grab on any vintage version or anything. So you're also करेक्ट looking for that initial user base to scale yourself. करेक्ट या करेक्ट to adopters, early adopters जिसे बोलते हैं. early adopters, correct. So people are interested in like scarcity, थोड़ी सी unpredictability in the market, and then looking to make some money, right? Uh, we are focusing on core gamers, like not hardcore gamers, but gaming in general. Even if you do casual gaming, we are looking at you as a potential customer, right? That you might make a purchase out of this, right? And what we are trying to offer is, say, if you invest, say, $100 or like say 100 rupees in a game, right? As on today, you don't get anything back out of that. What we are trying to give you is a chance that you might recover some of that money by selling that to someone else. Okay, that is how a used car secondary marketplace also works, right? Yeah. Similar thing. So we are saying that
अगर आप अभी तक एक ही मॉडल यूज कर रहे थे कि आप सिर्फ पैसे दे रहे थे, वन वे होता, देयर इज नो रिकवरी ऑफ दैट। कल को आप गेम से बोर हो गए, आपने बंद कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, यू आर डन। व्हाट वी आर सेइंग इज कम लिस्ट विद अस, सी if you could sell that, if you can sell that, maybe use that money to play other games, right? ये अभी नहीं होता है, तो हम इसकी तरफ मूव करना चाहते ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो मैंने एनएफटी का सुना है. हैं। that you can also make money out of your purchase that you have done, and if it क्या, increases in value sometime, या and you हाँ, might इंक्रीज get इन वैल्यू तो royalties going मैं on. नहीं Yeah. बोलूंगा। आई वुड से देयर इज सम रिडेम्पशन आउट ऑफ इट, हाँ। Maybe you're hoping for another zero interest rate phenomena. So, Hmm. Yeah, but that's good to hear that you found your product market fit somewhere. That's a great thing. हाँ, still figuring out, still working on a lot of tweaks, so I think कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएगा। Promising markets across the world. India में अभी unfortunately because of like a very hostile environment, so we are not working towards India, but there are multiple other countries like say Singapore, UK, France, Korea, Japan, US, जहाँ पे environment is relatively stable, so ease of operations काफी better है, तो उन markets को अभी तो हम target कर रहे So India में crypto is all banned, right? 30% पूरा पूरा। पूरा बंद I है. तो would not recommend anyone doing crypto in India. It's a very difficult thing. So we from start only we stayed away from India because बहुत ही regulatory uncertainty थी. And as the years progress, I think it has gotten worse only. A lot of startups have closed down their shop. A lot of folks, founders have moved out. Um, ours is based out of like registered out of Singapore, UAE, तो हमें इतना issue नहीं है. And we are not catering to the Indian audiences, तो हमें कोई problem नहीं हो रहा है। बट हाँ, मतलब इंडिया इंडिया केटरिंग तो काफी डिफिकल्ट है। मतलब अगर आपको कुछ खरीदना हो, कैसे खरीदोगे यार? मतलब कोई पेमेंट रेल्स ही नहीं है, तो कहाँ ही आप ब्लॉकचेन पे टॉप अप कर पाओगे? Easy to get scammed now. They have put so much blockers on everything. एवरीथिंग, तो या, तो द आई वुड से लाइक द ultimate power to probably like derail blockchain would lie with like nation or the states, governments, wherein they could enforce कि हाँ ये करना ही नहीं है, हम अलाउ ही नहीं करेंगे, and all they have to do is just put in a few blockers and the industry will die. तो ऐसा है, but a lot of states have got taken this as a opportunity also, जैसे UAE देख लो, they came up with their digital regulation licenses. Singapore also came up with their licenses. So what's up तो with UAE? I think UAE is the crypto का वो capital ना. Like Switzerland is the banking capital of the world. हाँ Somehow UAE is doing good. So what is it हाँ, there? वहाँ पे क्या? मतलब they are inviting a lot of folks कि आप आओ हमारे यहाँ करो। In our experience इतना smooth तो नहीं है ना? They are interested in hosting very large players, say like a Binance or a Coinbase, because they know उनके साथ क्या होगा कि the monetary authority, like जैसे यहाँ पे SEBI है ना? तो Hmm. they would have to only deal with a very large entity. अगर आपने बोला कि नहीं, we are open to everyone, तो everyone across the spectrum will open a shop. So you'll have to deal with a lot many people. I don't think they have the manpower or the systems in place to deal with a lot. So they are putting checks and balances to allow larger businesses to thrive. Smaller startups का तो यार अभी भी I would say so ही है. It's not super helpful. But hopefully governments see the merit in tech at least, Yes, not in the that speculative हाँ, benefit, but tech में तो benefit देखना टेक चाहिए. में तो हाँ सबको दिख रहा है, तो सब करिए।